One thing I have learned, if I really wanted to protect my doctor, I need to educate them. Because lots of judgment which are coming in the court of law is troubling a doctor a lot. Becoming a precedent, and people are filing a frivolous cases of no reason. Every day I get a cases. Every day, morning to evening, at least minimum 7 to 8 calls, could be 12 calls also in a day from various part of the country in relation to the problem they are facing day in, day out, and also going to the court of law. The worst worry point to all my doctors is call from the police station. And nowadays, police station calls are very frequent and common. एक तो रीजन है एक्सटॉर्शन का, नया तरीका कि लोगों को ये पता है कि पुलिस कॉल्स इज गोइंग टू ट्रबल अ डॉक्टर. मेरे पास बहुत सारे केसेस आए हैं, एंड द फर्स्ट केस विच आई गॉट, आई इमीडिएटली रिकॉग्नाइज दिस इज द एक्सटॉर्शन कॉल, कि बंदा डॉक्टर से ट्रीटमेंट का एलिगेशन करके पैसे निकालता है. पहला तो कॉल आता है कि सर 3 महीने पहले मेरी वाइफ आपके पास आई थी, एंड दे विल टेक सम कॉमन नेम, सबनम, समथिंग लाइक कॉमन नेम. एंड अभी सोलापुर में हॉस्पिटल में एडमिट हुई है, शी वाज प्रेग्नेंट एट द टाइम, शी हैज गॉट दिस प्रॉब्लम. अब 3 महीने पहले का तो डॉक्टर को याद भी नहीं रहता, एंड ऐसे नाम की कोई पेशेंट आई है ये भी उसको पता नहीं रहता. बट ही गेट रियली फियर्ड. ही सेज दैट कि आपने जो मेडिसिन लिख के दिया था उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन हो गया और हॉस्पिटल में एडमिट है. और उसके बाद some other guy is going to call, जो अपने कॉलर आईडी पे कोई इंस्पेक्टर, पुलिस ऑफिसर कुछ तो भी ऐसे डाल के रखता है, and then they call you कि we have received a complaint regarding this complaint, I am from Solapur police station XYZ. and फिर उन्होंने बोला कि complainant definitely wanted to avoid the case, तो आप हॉस्पिटल का खाली बिल भर दीजिए, खाली 15,000 रुपीज बिल है. So looking to the smaller amount, doctor even don't remember the name of the patient, but fear that could be because of medicine or injection XYZ, and thinking that police officers the right, they pay initially pays 5,000, 10,000 or whatever demanded. फिर उनका डिमांड बढ़ता है. They will give you account of some hospital name, then my doctor pay, then again pay, and this way they extort money to the extent of good amount. This is only because of the fear. फियर क्यों होता है? क्योंकि इग्नोरेंस है, क्या होगा ये पता नहीं है. तो वी फॉलो ऑन गिविंग अ लॉट्स ऑफ मनी. आपने एमटीपी टैबलेट दिया है, आपने अबॉर्शन कॉज किया है, आपने ये किया है, लॉट्स ऑफ सर फ्रिवलेस एक्सटॉर्शन कॉल्स माय डॉक्टर्स आर गेटिंग. बाद में पता चलता है दैट आई यूज्ड टू गाइड अ डॉक्टर नॉट टू गो डाउन, नॉट टू गिव अ सिंगल पेनी, बिकॉज लॉ इज देयर टू प्रोटेक्ट यू एंड डिफेंड यू. लॉ इज वेरी गुड फॉर यू. हर चीज समझाने के बाद भी डॉक्टर डरता ही है. लेकिन आज चूंकि आई स्ट्रांगली बिलीव दैट एजुकेशन कैन ट्रांसफॉर्म अ पीपल, वी ऑलवेज टेक अ पेन टू एजुकेट अ डॉक्टर कि इस तरह के कॉल से घबराए नहीं, डरे नहीं, बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड बाय द लॉ इन दिस कंट्री. यू डू जस्ट पीसफुल प्रैक्टिस. इतने ही नहीं, फ्रिवलेस केसेस कंज्यूमर कोर्ट में फाइल किए जाते हैं, नोटिस भेजे जाते हैं. एक ही चीज है कि डॉक्टर सॉफ्ट टारगेट है. Doctor is not going to say any word because they fear for reputation loss, and reputation loss के डर से वो काफी पैसे नुकसान करता है अपना. Today I am going to discuss everything in relation to that, just to make you understand that never ever get terrified, never ever get feared with any such a call, because law is good for the doctor. When I say so, I say with my personal experience of हैंडलिंग लॉट्स ऑफ केसेस माय फ्रेंड. मैं जानता हूं सबसे बड़ा डर पुलिस ऑफिसर का ही है, पुलिस स्टेशन का ही है, जेल पनिशमेंट का ही है. लेकिन क्रिमिनल लायबिलिटी क्या बोलती है? क्रिमिनल लायबिलिटी बोलती है बहुत ही क्लियरली कि यू हैव डन द ट्रीटमेंट ऑफ अ पेशेंट, योर इंटेंशन वाज नॉट देयर टू किल. इफ पेशेंट डाइज, इट डज नॉट मीन दैट यू आर क्रिमिनली लायबल फॉर हिज और हर डेथ. बहुत ही क्लियर है. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ब्यूटीफुली इंटरप्रेट किया है माय फ्रेंड. एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ह्यूमन बॉडी इज अ कॉम्प्लेक्स मशीन एंड मेडिकल साइंस इटसेल्फ इज अ कॉम्प्लेक्स साइंस. हेंस फॉर एवरी मेडिकल accident in the form of death, doctor must not be held responsible.
When Supreme Court is trying to protect you by the guidelines given in case of criminality, then why to worry? Because Supreme Court ने बहुत ही clearly बोला है कि अगर ड्यू केयर दिया गया, what is expected from the doctor? That आपके पास knowledge है, complication आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अगर complication हुआ है तो आपने अपना नॉलेज यूटिलाइज किया है क्या, आपने कोशिश की है क्या पेशेंट की लाइफ बचाने की? अगर आपने पेशेंट की लाइफ बचाने की कोशिश की है तो यू आर नॉट लायबल. That need to be seen on your medical record that all possible care which needed to be given has been given to the patient properly or not. My friend, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि डॉक्टर कैन नॉट बी अरेस्टेड ऑन द स्पॉट फॉर कॉजिंग अ डेथ ऑफ अ पेशेंट ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट. Let me tell you very clearly and categorically that Honorable Supreme Court ने गाइडलाइंस फॉर्म किया है कि अगर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी डॉक्टर के ऊपर लानी है, जैसे उसने एनेस्थेशिया दिया, लोकल एनेस्थेशिया, पेशेंट टेबल डेथ हो गया, इंजेक्शन दिया, एनाफिलैक्टिक शॉक आया, पेशेंट का डेथ हो गया, सर्जरी में पेशेंट का डेथ हो गया, डिलीवरी में पेशेंट का डेथ हो गया, इन एनी गिवन सिनेरियो सिचुएशन डेथ हो जाती है, तो देन गाइडलाइन से दैट यू कैन नॉट अरेस्ट अ डॉक्टर ऑन द स्पॉट, यू नीड टू सेंड इट फॉर एक्सपर्ट ओपिनियन. और उसका बैकग्राउंड उन्होंने क्या बोला है कि मेडिकल साइंस इज एग्जैक्ट साइंस which is beyond imagination of medical practitioner. Being an expert science, medical doctors are only expert in this field. Judges, advocates, complainant, or per se police officer are not expert in medical science. Hence, to fasten a criminal liability, it need to be referred to the expert body to open eyes. और इसको 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने कितने टाइम लगते हैं, we don't know. But then opinion is mandate. My personal experience, if medical records are proper, due care has been seen in medical record, all possible care has been provided to the patient, which is reflected on medical record. Maximum time opinion doctor का आता है, sufficient treatment given, no negligence on treating doctor. The moment this word comes, case बंद हो जाता है. So never ever get terrified with any police officer's call. So whoever calls you, introduce himself or herself as a police officer or local police station or approaches to your police station or all approaches to your clinic. Never ever get terrified. You are far superior than any person in this world because you are giving a life to the human. So अपने आप को inferior नहीं समझना. Always confident रहो because you are not going to be arrested on the spot. That is what is the law of the land. So never ever get terrified. अगर समन भी आता है तो try to understand why this summon has been given. Section 91 में समन है तो डॉक्यूमेंट के लिए है, 174 में है विटनेस के लिए है. तो समन भी आ जाए तो you need to just you know respect the summon, attend the police station, give your witnesses, give your statement. You're not going to get arrested, my friend. Believe me, except in forgery case, मेडिक्लेम की forgery में आप involved हो, डेथ सर्टिफिकेट देने के लिए आप involved हो, forge डॉक्यूमेंट देने के लिए आप involved हो, तो that is not a medical negligence. लेकिन the question of medical negligence comes, you are protected by the law. And that's the reason I say, never ever get terrified. Patient जिंदा भी है तो he is going to go to the police station. Injection abscess भी हो गया, he is going to go to the police station. There is no question that anyone can stop him. तो उसके जाने का ये मतलब नहीं होगा कि you are going to get arrested. Simple inquiry के लिए you get a call, you need to give a statement. फिर अगर मान लो प्रूव होता है तो भी छोटे सेक्शन है, 304A है डेथ पे या जिंदा रहने पे 336, 337, 38 ऑफ आईपीसी है, जिसके अंदर मैक्सिमम पनिशमेंट 6 मंथ होगा या 2 years होगा. So even if maximum punishment is 0 to 2 years, it becomes bailable offense. Bailable मतलब you are not going to go behind the bar. It is your right to get a bail. So never ever get terrified even in death has happened. मैं नहीं बोलता intentionally cause करो, intentionally भी murder लगता है, लेकिन intention नहीं है तो there is no question that any section can really trouble you. So my friend, remember, criminal liability 304A बोलता है causing a death without intention with negligent act. ड्राइवर ने गाड़ी चलाते टाइम किसी को डैश किया, सेम सेक्शन. डॉक्टर ने भी किया, सेम सेक्शन. इसलिए हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज डिमार्केटेड बोथ द थिंग्स, द नेग्लिजेंस डन बाय द ड्राइवर एंड नेग्लिजेंस डन बाय द डॉक्टर. एंड सुप्रीम कोर्ट हैज गॉन अ स्टेप अहेड एंड सेड टू फास्टन अ क्रिमिनल लायबिलिटी अगेंस्ट द डॉक्टर, द नेग्लिजेंस मस्ट बी ग्रॉस. द वर्ड यूज्ड इज ग्रॉस. मतलब आपने लेफ्ट की जगह राइट इम्प्यूट कर दिया या आपने मॉप अंदर छोड़ दिया which led to septicemia and death.
then it can be a gross. Then opinion is not needed, which can be seen from the eyes. Unless it is a gross or a high degree, there should not be any criminal liability against the doctor. So normal routine cases में अगर आप देखोगे, it's all simple medical negligence. So not to worry, my friend, you are not going to be troubled by the law administrator.